Good evening, everyone. My voice is clear to all? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So last class you discussed about Karl Marx, right? So mostly your discussion was surrounded about historical materialism and a little bit about class struggle, right? So we will continue the discussion today. So let me share my screen first. So the Zoom is malfunctioning for some reason. तो जदि मझिरे किछि disturbance होची बोले मते टिके जणे देबो. Okay? Okay. So let me share my screen. Okay.
Screen is visible to all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Visible. Okay. So before proceeding with the lecture today, can you tell me what do you understood about means of production, forces of production, and relation of production? कौन बुझिलो? टिके कि briefly कहि परिबो? Last class रे कौन बुझिथिलो? Actually, madam, कार्ल मार्क्स जो कोई थे consider have or have not class. Hello. One by one कहंतु. हाँ. Okay. Yes, Actually, कहो. कार्ल मार्क्स जो कोई madam से have class और have not class तांकर माने difference सब होते थे और relation of production भीतर होते थे जे माने indirectly माने तापर हमर जो feudalism रहिला ancient रे केमती होतला modern रे केमती हला communism केमती आसिला से विषय रे माने brief idea देथिले से समय रे slave class तापर master class रे से माने माने problem होता हम deprive रहउतले हमर labor class माने तापर modern रे industrialist माने माने bourgeois माने proletariat माने को माने problem होतला ଆଉ କିଏ କହିବ? Very good. ଆଉ କିଏ କହିବ? So basically ଯେତେବେଳେ ଆମେ कार्ल मार्क्स कोच ଆମେ कार्ल मार्क्स को केतेटा कीवर्ड सहित एसोसिएट करबा हैला तांकर मोस्ट काली सर कहते हमर जो माने इकोनॉमी जेटू चेंज होची तो इकोनॉमी चेंज हेबा द्वारा हमर सोसाइटी मध्ये चेंज होची हां सेटा भी गोटे कहितला हमर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म माने हां जो सेथिरे मटेरियलिस्टिक तमरो one idea when it comes to conflict with another idea a new idea comes right तो सेडा को हमें आज डिस्कशन करबा सो कंटिन्यूइंग विथ इट हमें कार्ल मार्क्स को केतेटा इंपोर्टेंट कीवर्ड सहित एसोसिएट करबा हैला फर्स्ट होची तमरो मोस्ट इंपोर्टेंट जिंसो जहा विषय से बहुत डीपली अंडरस्टैंड करथिले से कथा भी हेतिले दैट इज कैपिटलिज्म एक्सक्यूज मी मैम यस सर काली जो नोट सेंड करले से नेट भी पढिबा ना कि अदर हां सही नोट पढिबाटा आज देखो मु एबे कोन कि तमरो एलिएनेशन आउ क्लास कॉन्फ्लिक्ट या क्लास स्ट्रगल आउ थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म विषय हम आज आ काली डिस्कशन करबा सेथिरो नोट सब मु दे देबे और सर जो नोट्स देचंती सेडा भी तमे रेफर करिवो ना साइमल्टेनियसली आज जो टॉपिक्स माने हमें पढिबा आज मु से टॉपिक्स नो नोट्स दे देबी सर जो काली कहथिले सेडा माने भी तमे रेफर करिवो है ना ओके सो कंटिन्यूइंग विथ इट first important keyword is capitalism which is what he stressed upon a lot capitalism छड़ा तमरो class conflict और class struggle विषय से कथा हिथिले और alienation विषय से कहिथिले आज हम क्लास रो मेन फोकस होची capitalism theory of capitalism and class conflict हला मु एथरे केतेटा पिक्चर्स नै जाई छी जोडा हमें टिके पिक्टोरियली अंडरस्टैंड करबा को जोडा हमको टिके हेल्पफुल हबो तो हमें थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म रो स्टार्ट करबा सो कैपिटलिज्म रो मु डेफिनेशन एठी नै छै काली जंती सर तुमको बुझेई थिले केंती सोसाइटी टा स्टेजेस रे प्रोसीड करी छी फर्स्ट असला तमरो कोन प्रिमिटिव कम्युनिज्म राइट Primitive communism, ancient mode of yes and your ancient society जोटा हला primitive society your early men stage जोटा हम कहि परिबा then came your slavery then came your feudalism तापर आसिला capitalism तापर मार्क्स कहले कि तांकर डायलेक्टिक्स जो कांसेप्ट को नै के कहले कैपिटलिज्म रे जतळे दुटा क्लासेस अछंती गुटे ओनर क्लास आ गुटे तमरो वर्किंग क्लास जतळे तांको भितर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हबो क्लास कॉन्शियसनेस हबो सेते बेले जो लोअर क्लासेस ता से माने दे विल राइज अप अगेंस्ट द ओनर क्लास
and the society will change. Then socialism will come in the society, and ultimately communism will come. Right? So first let us understand what is capitalism. एठी capitalism रो definition ता नहीं जाइछि. means So it is an economic. फ्यूचर रे हमर सोशलिज्म आ कम्युनिज्म आसे बोली कहिथिले. हां हंती से कहिथिले. मते एक सेकंड. हाँ तो कार्ल मार्क्स एंती कहिथिले कि एबे कैपिटलिज्म परे जेतळे क्लास कॉन्शियसनेस इंक्रीज हबो within your working class, labor class, they will rise up against the owner class or the capitalist, and the capitalism will be there will be the downfall of the capitalist society, socialism will come, and ultimately communism will come. एंती से कहिथिले. तो कैपिटलिज्म ही गला तमरो. It is an economic and political system in which a country's trade and industry are controlled by a private owners for profit rather than by the state. So private property is the conditioning factor of capitalism. Okay, तो एथिरा हमें जदि present scenario को देखिबा. Okay, 3 types of society are important. Capitalism परे socialism, तापर गोटे मिक्स्ड इकोनॉमी, and your last one is a communism. Capitalism तो based on capitalist economy, जो थिरे तमरो गुटे owning class रहबे आ गुटे working class. Owning class रा होचंते तमरो capitalist. Okay, and they will exploit this working class for what reason? For profit generation. Okay, and this working class will sell their labor in exchange of wage. Right? So this is how their relation is, the owning class and working class. तो ए जो सिस्टम कैपिटलिज्म सिस्टम होची मोस्टली बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. तमरो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को किए ओन कला, किए ओन करिवो? कैपिटलिस्ट ओन करिवो. तापर तमर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ही गला, तापर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एटा सब आसीबो कांसेप्ट. सो हियर द ओनिंग क्लास, द डोमिनेंट क्लास इज योर capitalist class. Okay, it is mostly a profit oriented society, and the capitalists try to suppress the owning class in order to generate profit. Now what about socialism, mixed economy, and communism? Socialism रे जो ट्रांजिशन पीरियड रे जेतले से कम्युनिज्म टा आसीबो, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम टे आसीबो हला. तो सोशलिज्म बोले तुम कोन बुझुचो? What do you understand by socialism? First tell me that. मैडम इक्वालिटी रहइबो. Equality. आउ टिके elaborate करि परिबो खंती? लेबर क्लास मानकर माने लेबर क्लास मैडम को Share जेंति के करिबे. माने डिपेंडेंट क्लास एंति न रहिबे मैडम. आ मोनोपोली न रहिबो. हां जोटा माने शेयर करि. ओके. आउ किछ ऐड करबा को चाहबो? लेबर क्लास माने माने कंट्रोल करथिबे. मैडम कथा कहले माने क्लास स्ट्रगल जो अछि क्लास इन माने जो क्लास स्ट्रगल न Itself and class for itself. हां Yes, सेंति किछ कांसेप्ट न थिबो. ओके फाइन. madam. आउ के किछ ऐड करबा को चाहबो? सेंट्रल प्लानिंग रहबो. सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम ता तमरो कम्युनिज्म रे पळे आसीबो. अच्छा, let me elaborate. Okay, tomorrow capitalism is mostly based upon
private ownership, whereas your socialism, there is limited private ownership. There is limited private ownership, and mostly everything is controlled by government. Okay, mostly is controlled by the government. एटी गवर्नमेंट रो बेसी किछि इन्फ्लुएंस नाही. आगो को मु तुमको सुपर स्ट्रक्चर विषय रे कहिबी केंती सुपर स्ट्रक्चर जोटी मोस्टली constitute your police, your courts and other government official, how they help the capitalists to be in the power, to maintain their capitalism, how they help the capitalists and suppress the lower classes. सेटा मु आगरे डिस्कस करिवि. ता पूर्वरु सोशलिज्म रे लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप रहउची. आउ most of the properties or mode of production is controlled by your government. Okay, एथिरे कोन होची तमरो सोसाइटी रे जेतकी भी कंट्रीब्यूशन रहइबो तुमको as per your contribution तुमको मिलिबो सोसाइटी रे. एठी कोन कैपिटलिज्म रे कोन तमरो जेतकी भी कंट्रीब्यूशन थाउ most of the profit will be taken by whom? The capitalist. हला एठी कोन होची your resources, all this fight is because of resources, right? At the end of the day we need resources to survive. तो socialism ने कोन होची जो resources रे division हेले जेतकी तमे तमरो contribution दोचो. Okay, you are given as per your resource distribution. This socialism, communism is mostly based on the distribution of sources. केंती resources distribution होची हला. मु तुमको example देखि बुझेबी बहुत simply हला. तो this is based on how much you are giving and you will be getting back equally. Okay, सेतकी तुमको मिलिबो. For example, एबे तमे आमे गोटे पार्टी रखिबा हला. आमे गोटे पिकनिक कला suppose. सबे 100 रुपीस कंट्रीब्यूट हमें 100 रुपीस कंट्रीब्यूट करके रिसोर्सेस 100 रुपीस तमे जदी देचो तमे कंट्रीब्यूट करचो बोले 100 रुपीस एतकी तमे रिसीव भी करिवो माने 100 रुपीस रो तुमको टिफिन मिलिवो. जदी तमे 50 रुपीस कंट्रीब्यूशन देचो बोले तुमको 50 रुपीस रो ही टिफिन रिसीव हबो. सेंती भलिया बुझी पारलो. तो तमे एबे जदी सोसाइटी रे जेतकी तुम कंट्रीब्यूशन रहूची तमे सेतकी हिसाब रे पाइबो. On the other side, communism रे कोन हो जिवो no private property ownership. Okay, no private property ownership. And एठी कोन हबो you will be given, resources will be distributed as per your need. Resources given as per your need. For example, again coming back to the picnic example, तमे सबु 100 टंका इक्वली सबे जदी कंट्रीब्यूट करूचो किंतु खाइला बळकू तम पाखे तम कैपेसिटी होची जणको कैपेसिटी रहला 2टा समोसा खाइला कैपेसिटी, जणको हला 5टा समोसा खाइबा कैपेसिटी, नम्रता रही गला से 10टा समोसा खाइ परिबो, निवेदिता रही गला से 2टा ही खाइ परिबो. से 100 टंका देला किंतु से ओनली 2टा रो अधिक खाइ परिबोनी से. देन शशांक he can eat only one samosa, that is his capacity. So here according to your capacity or according your need the resources will be distributed. बुझी पारिलो? Any doubt, any confusion? So देखो एबे कैपिटलिज्म रे कोन होची सबु प्रॉफिट रिसोर्सेस की एक्युमुलेट करिक रखुची, कैपिटलिस्ट एक्युमुलेट करिक रखुची. किंतु सोशलिज्म रे कोन हबो इट विल बी गिवन इक्वली बैक टू द सोसाइटी. जे जतकी कंट्रीब्यूट कला ताको सेति की मिलिबो सोशलिस्ट सोसाइटी रे.
whereas in communist society तुमको जितकी दरकार हैला जितकी नीड हैला तुमको सेतकी ही मिलेबो जेंति कि जदि हमें एठी प्रिमिटिव कम्युनिज्म रो मु एग्जांपल नहीं जाउछ हैला एबे तो कोनोसी सोसाइटी रे तुमको एब्सोल्यूट कम्युनिज्म देखिबा को मिलिबोनी इन द प्रेजेंट time that we are living. Nowhere, no country, no society you will find absolute communism. There is no such society. So primitive communism ro jodi mo example jodi nouchi, early man kemti thile, they were living in a forest land. Okay, setire tanku jetki resources darkar, tanku jodi for example they need only 1 kg of berries, fruits for the day आजी पाई तांको 1 kg of fruits रे तांकर काम हे जिवो, तांकर सर्वाइवल हे जिवो, से माने सेतकी ही कंज्यूम करिवे हला। से माने जदि तांको if they are killing one deer तो तांकर 1 month पाई सर्वाइवल हे जिवो, तो से माने सेतकी ही कंज्यूम करिवे, ताटो अधिक करिवेनी, बुझलो। तो जेतकी नीड अछि से हिसाब रे तुमको डिस्ट्रीब्यूट हबो रिसोर्सेस, एटा होची तमरो कम्युनिज्म रो फिलोसफी। एबे सोशलिज्म रो जदि मु एग्जांपल देबी तो हमें नहीं पारिबा रशिया को, प्रेजेंट डे सोशलिस्ट हाउ रशिया रे देखिबो तम प्राइवेट कंपनी सब अछंती, राइट, बट रशिया रे कहारो डोमिनेंस बेसी, कहारो कंट्रोल बेसी, व्लादिमीर पुतिन। yes or no, he is controlling the factories, he is taking all the important decisions, right, and he is deciding how to distribute the resources among various categories of people. So Russia can be an example of your socialist society. तापरे आसला तमरो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी रो एग्जांपल होची तमरो इंडिया। इंडिया रे तमे बिफोर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स हेतिला, राइट, 1991 रे एलपीजी रिफॉर्म्स हेतिला। So before 1991, your India was a socialist, was working under the socialist principle. But after 1991, India is now a mixed economy. Okay, India is now a mixed economy because how? After LPG reforms, public sector enterprises sobu asile. Yes or no? You will see a rising startup culture. Then you will see foreign direct investment coming to India. But earlier, before 1991, there was no such concepts in India. Mostly the properties were owned and controlled by your government. Before 1991, there were no such foreign investment coming into India. But after LPG reforms, there was a rise in public sector enterprises. Now you will see a booming startup culture in India and also an incoming source of foreign direct investment. So India is a mixed economy. You will see both public plus private ownership. India is neither fully capitalist or fully socialist or fully communist society. जदि आमे कम्युनिस्ट सोसाइटी जदि नमा कम्युनिज्म नेबा तो एंती एब्सोल्यूट कम्युनिज्म तो के नहीं, नो डाउट चाइना, the society which claims itself as a communist society, is not really very communist. We can say they practice extreme communism. Okay, you will still see a very big hold of power in the hands of the government. There are a lot of billionaires living in China. Alibaba jinti, Alibaba jo owner achanti in China. Even if he is very wealthy, even if he is controlling the means of production, but there is a lot of impact and influence of the government over him. Yes or no? So ame tikke reality re jodi ame dekhiba in the present day,
communism doesn't really exist. There is no, concrete communism that exists, but somewhat similar you can see China, tapre Venezuela गोटे आम एग्जांपल नहीं परिवा, आ गोटे नॉर्थ कोरिया, ए कंट्री गुडा को बहुत एक्सट्रीम कम्युनिज्म से माने प्रैक्टिस करूजंती. Not exactly what communism is saying, means like complete no private property ownership. There is ownership, but a very extreme way रे से माने कम्युनिज्म को देखुजंती हला. मोस्टली एबे भी देखिबो टिके गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस रहउची. तो सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म टिके एबे बुझा पड़ला. इन केस एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Any doubt or all clear? कैपिटलिस्ट सोसाइटी रे केंती कोन हबा हमें बुझिला. तापर सोशलिज्म रे केंती कोन हबा हमें बुझिला. मिक्स्ड इकोनॉमी हम जो इंडिया टा होची मोस्टली है मिक्स्ड इकोनॉमी. एंड कम्युनिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी you will find mostly not concrete capitalism or absolute capitalism, but a little bit of capitalism in your American society and your European society. Okay, এটা টিকে কনফ্यूजिंग লাগুথিবা এবে, কিন্তু as well proceed with the chapter you will understand what I am trying to say here. कोन एटा सब distribution of resources हला आ एटा सब हम concept तमे बुझिबो when you will entirely understand the topic जहा भी कार्ल मार्क्स रो अछि, तापर तुमको एटा सब बुझा पड़िबो. तो एथे किछि डाउट काकू? ऑल क्लियर? मैडम एटा सब लेखियो नोट ना मैडम, एटा सब देई दे परे नोट क्लास चला परे. देखो नोट तो मु एटी जहा करूची मु तुमको सेंड कर देबी. जदि तमे किछि निजे नोट डाउन करबा को चाहो इट इज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज़ तमे तमो अटेंशन टा रहइबो, राइट? तो तमे नोट करले भी चलिबो. एटा जहा भी मु नोट करूची एटा सब तुमको मु अपलोड कर देबी टेलीग्राम रे. मैडम आगरो ताई कम्युनिज्म में मैडम ई जन ए चाइना रो वन चाइना पॉलिसी तापर वन चाइना पॉलिसी टा आसीबो कि नै? हां, बट सेटा एब्सोल्यूट कम्युनिज्म हमें कहि परबानी. जेंति को मु कहली तमे रियलिटी रे एब्सोल्यूट कम्युनिज्म तुमको एबे कोन से सोसाइटी रे देखिबा को मिलबोनी. ओके, जहा भी दिसिबो टिके एक्सट्रीम और बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म रे तुमको कम्युनिज्म दिसिबो, किंतु तुमको तो प्रॉपर कम्युनिज्म जोटा ही गला सेटा तुमको कोन से सोसाइटी रे दिसिबोनी हला. एबे एटलीस्ट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन. ओके ओके, सो नाउ कार्ल मार्क्स रो कोन कहबार अछि सोसाइटी विषय रे. हमें पढ़ला वेरियस way stages through which society is transitioning, right? Your primitive communism hi gala, then from slavery, then from feudalism, capitalism, socialism, and last one is your communism. Enti transition habo boli se kohu janti hala. So what is Karl Marx understanding of society? Okay, Karl Marx society को केंती देखुचंती. So according to Karl Marx, society is interrelatable and mutable. According to Karl Marx, society is interrelatable and mutable. So every aspect of society is interrelatable. बुझिलो, सब aspect of society is linked with one another. तापरे पे पहले mutable टा माने कोन होउचे? Mutable he means, from the word mutable he means that society is not fixed. Okay, society is not fixed. That means society is continuously progressing and society is continuously changing. It is true or not?
आमे देखला ए चेंजेस सब होची प्रिमिटिव कम्युनिज्म रो स्लेवरी आसला स्लेवरी रो आसला फ्यूडलिज्म एबे कैपिटलिज्म चली छी आमे कोइ परिबा राइट सो सोसाइटी इज चेंजिंग कंटीन्यूअसली से एंती सोसाइटी को देखले हला तापरे आमे इंट्रोडक्टरी क्लास रे आमे डिस्कस करथिला अबाउट फंक्शनलिज्म योर conflict perspective and your symbolic interactionism हला तो फंक्शनलिस्ट माने कोन कहंती गुड हला फंक्शनलिस्ट देन योर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट जोड़ा ही गले कार्ल मार्क्स आइबे ता अंडर रे आ गुटे तमरो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट एडा हम स्टार्टिंग क्लास रे डिस्कशन करथिला डरखाइम ए माने सब आसीबे तमरो फंक्शनलिस्ट रे whereas symbolic interactionist रे तमरो यू नो वेबर माने सब पळे आसीबे सो वेबर जीएच मीड ए माने सब आसीबे so functionalist mostly focuses on society okay it studies and give emphasis on society a functionalist मन को कोन कहबार अछि कि humans are passive माने humans रो किछि एक्टिव रोल नाही सोसाइटी रे जहां भी चेंजेस होची कि किछि भी होची humans रो किछि सेठी एक्टिव रोल नाही whereas symbolic interactionists they try to understand society in a very individual driven way माने इंडिविजुअल को से माने बहुत ही फोकस रखंती ठीक अछि एबे सोसाइटी को कार्ल मार्क्स केंति कंसीडर कला हम देखिनो तो कार्ल मार्क्स रो ह्यूमन विषय रे कोन कहबार अछि so he doesn't consider human nature and human mind as passive तांको कहबार अछि कि human nature or human mind is not passive they have an active contribution in the changes and every aspect of society unlike your functionalist and symbolic interactionist ठीक अछि unlike your mostly functionalist रो से माने कहउतिले कि human are passive symbolic interactionist से माने बेसी इंडिविजुअल को स्ट्रेस करूतिले तो हमें जदि रेडार रे रखिबा हला फंक्शनलिस्ट मोस्टली सोसाइटी को प्रेस करिवे सब जिंस रे सोसाइटी को एम्फसिस देबे हु फंक्शनलिस्ट से माने बहुत एक्सट्रीम लेवल रे पळेले सोसाइटल लेवल रे आउ तमर सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट से माने इंडिविजुअल लेवल रे पळेले हला कार्ल मार्क्स आसीबे तमरो मझिरे he considered both society and individual while studying as we saw initially कि केंती गुटे डिबेट चलथिला कि हमें इंडिविजुअल को पढिबा कि नै सोशियोलॉजी रे तो कार्ल मार्क्स तो स्टडी कला को से इंडिविजुअल को भी फोकस करथिले सोसाइटी को भी फोकस करूथिले हला why I am saying this because as we proceed with the topic you will understand that how he has balanced both individual and society okay we need to understand while studying about various perspective and various thinkers that तांको main focus कोथिरे रहला इंडिविजुअल को बेसी एम्फसाइज करजंती ना सोसाइटी को बेसी एम्फसाइज करजंती कार्ल मार्क्स से टिके कोन कि इंडिविजुअल को भी कंसीडर करूथिले हला मोस्टली he talked about society but he also considered about individuals same is Max Weber okay तो इंडिविजुअल विषय से तमरो एलिएनेशन कांसेप्ट रे तमे पढिबो से इंडिविजुअल को केंति कंसीडर करी कि तांकर ए थ्योरीटा देथिले बुझिलो तो इंडिविजुअल रो बहुत रोल रहुची तमरो प्रोडक्शन रे कार्ल मार्क्स कैपिटलिस्ट सोसाइटी विषय रे कथा होजंती capitalist system is based on production now we can relate the capitalist system with the how capitalist system emerged with the industrial revolution or not industrial revolution सहित हमें capitalist system रो emergence को link करि परिबा कि केंती हेतिला
आम सोसाइटी आगो बहुत ही फ्यूडल सोसाइटी टा थिला, बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन होथुला, किंतु तापरे कोन हला पॉपुलेशन इंक्रीज हला, पॉपुलेशन इंक्रीज हला को कोन हला डिमांड्स इंक्रीज हला, डिमांड्स इंक्रीज हला जोगु को हला फैक्ट्री सेटअप करा गला, फैक्ट्रीज एंड मशीनरी सेटअप करा गला फॉर फुलफिलिंग दिस डिमांड्स। एबे जो थिरे फैक्ट्रीज सेटअप हेई छी से थ्रू जो रूरल बैकग्राउंड रो लोक आसी की या फिर लेबर क्लास रो लोक आसी की सेठी फैक्ट्रीज रे काम करिले, तो से माइग्रेशन थ्रू कोन हला अर्बनाइजेशन हला। अर्बनाइज सोसाइटी इज अ वेरी हेट्रोजेनस सोसाइटी, हेट्रोजेनस सोसाइटी रो क्लास इमर्ज हला, गुटे हे गला तमरो ओनर क्लास जे फैक्ट्री ओन करथिले, आ गुटे लेबर क्लास जे फैक्ट्री रे काम करबा पई आइसथिले मोस्टली फ्रॉम द कंट्री साइड हला। एंती दुटा क्लास इमर्ज हे गला, तापरे क्लास इमर्ज हला परे कोन प्रोडक्शन टा इंक्रीज हला, मास प्रोडक्शन हला, मास और कमर्शियल लेवल रे प्रोडक्शन हे गला। आगो जोटा जस्ट डोमेस्टिक लेवल रे प्रोडक्शन होतला मु बोली मु एंती कहिथली लास्ट क्लास रे जे तुमको मन अछि, कमर्शियल लेवल रे प्रोडक्शन हे गला, कमर्शियल लेवल रे प्रोडक्शन हे गले कोन हबो सरप्लस जनरेशन हबो। सो सरप्लस कांसेप्ट इंट्रोड्यूस हेबा जोगु कैपिटलिस्ट सिस्टम टा तमरो इमर्ज हला। सरप्लस हेले कोन हबो तमे एक्स्ट्रा तमे सेल करि पारिबो, ट्रेड करि पारिबो, आ तम एक्स्ट्रा कोन हि जिवो प्रॉफिट हि जिवो। आ तपरे ओनर क्लासेस टा समान तांको प्रॉफिट केंती एक्सट्रैक्शन करूथिले या फिर सरप्लस जनरेशन केंती करूथिले, जो वेज माइनस लेबर पावर, वेज माइनस लेबर पावर होची अधिक समय पाई लेबरर्स को काम करिबा पाई कहउथिले, एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स and very limited wage was given. They will be working for like 16 hours, 18 hours, but their wage will be very limited. So this was helping them to generate surplus. Now through this concept, earlier when society was very simpler, now from this concept your capitalism emerged. Yes or no? Which is why you will see capitalism re tome modes of production, तापरे फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आउ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को फोर्स तमे फोकस करूचो, ओके, बिकॉज दिस इज हाउ द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज ऑल अबाउट। तो बुझी हला एटा इमर्जेंस केंती हला कैपिटलिस्ट सोसाइटी रो, हम एटा को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सहित लिंक करि परबा। एथि पई हमें प्रोडक्शन विषय बेसी हमें कैपिटलिज्म डिस्कस करला बेलको हमें प्रोडक्शन विषय इकोनॉमिक एस्पेक्ट जेंती स्टार्टिंग ऑफ द क्लास रे जने कहला हमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखुछु, आ इकोनॉमिक एस्पेक्ट थ्रू केंती चेंजेस आसिला। फ्यूडलिज्म रे जतले बहुत सिंपलर इकोनॉमी थिला, सेतरे एतकी क्लासेस एतकी डिवाइडेड नथिले, बट एज द सोसाइटी प्रोग्रेस्ड एंड बिकेम इनटू अ मोर कैपिटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ सोसाइटी, तो हमें देखला इकोनॉमिक चेंज, सरप्लस प्रोडक्शन आउ इकोनॉमिक चेंजेस थ्रू केंती तमर सोसाइटी टा चेंज हला, बुझिलो। सो मैडम आउ थरे टे कहि दो टे इमर्जेंस टिके इमर्जेंस देखो, इमर्जेंस रे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमें प्रथम क्लास जोडे इंट्रोडक्टरी क्लास रे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढिथिला। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काहे कि आइला, तम कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन रो आसिला। स्टीम इंजन रो जेबे इन्वेंशन हला, तमरो जो ट्रेड एंड कॉमर्स को सेटा बूस्ट देला, तो सेथरो कोन हला पॉपुलेशन इंक्रीज हबो कि नै। व्हेन यू आर गेटिंग सफिशिएंट रिसोर्सेस then population will increase, then demand will increase. So demand increase हले कोन तुमको प्रोडक्शन भी आगो जोटा डोमेस्टिक लेवल रे प्रोडक्शन होतिला। फॉर एग्जांपल आगो जोटा डोमेस्टिक लेवल रे राइस प्रोडक्शन होतिला, फैमिली रे जते जण थिबे से माने टिके प्रोड्यूस करिवे, तांकर 1 एकड़ रो जदी एरिया अछि सेथरे से माने फॉर एग्जांपल 25 kgs they are producing, they will store it for themselves and they will consume it and will produce as much as they need. Whereas in
commercial level production kala ko kono 25 kg plus you have to make some additional production 40 kgs tama produce करूचो 40 kgs जदि produce करूचो माने कोन 25 kg निजो पई रखलो आ बाकी जेतकी भी तमरो रिमेनिंग जेतकी रहि गला सेटा तमे कोन करबो सेल कर देबो सेल करले कोन तम प्रॉफिट हबो तो तमरो सेठी ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट ही गला सो से डिमांड इंक्रीज हला जोगु तुमको फैक्ट्री सेटअप करबा को पड़ियाला so that this demand can be fulfilled फैक्ट्री सेटअप कले फैक्ट्री रे काम करबा पई लोक दरकार आ जो जे माने मोस्टली पिजेंट्स माने सबु माइग्रेट करि गले फैक्ट्रीज एरियाज को माइग्रेट कला कोन हला से आखा पाखरे पॉपुलेशन इंक्रीज हला सेटलमेंट्स इंक्रीज हला को अर्बनाइजेशन आसिला तापरे एथिरो कोन हला गोटे हेट्रोजेनस तमे अर्बनाइज सोसाइटी को हेट्रोजेनस जोटी वेरियस काइंड ऑफ पीपल आर लिविंग हेट्रोजेनस सोसाइटी बोली कहबो तो हेट्रोजेनस सोसाइटी रो दुईटा क्लासेस इमर्ज हेले गोटे ओनिंग क्लास गोटे लेबर क्लास ओनिंग क्लास इज योर द क्लास दैट इज कंट्रोलिंग और own the factory labor class are the people who are working in these factories now through this your mass production was possible commercial production was possible अब commercial production रो कोन हला surplus generation हला so surplus रो कोन होतला profit आसुतला तो से profit generation केंती होतला जो owning class टा profit generation केंती करथला से बहुत limited wage रे laborer को बहुत extended period पई काम करबा पई कहउतले so through that way surplus generation से माने कले now जो limited wage रे basic time जाई काम करू जंती this is a form of exploitation or not this is a form of exploitation or not for example now you are working under me you are working for 16 hours I will tell you to make tables I will ask you to make notes and everything but I will only pay you 2000 rupees per month are you going to work for me until and unless it is not any urgency or it is not about the matter of your survival are you going to work for me no right so this is what Marx said this is exploitative this system where the capitalist is trying to generate surplus where the capitalist is trying to generate profit by decreasing the wage and making the laborer work for a very long period of time सेटा को से कहले कैपिटलिस्ट सिस्टम इज व्हिच इज वाई इज वेरी एक्सप्लॉइटेटिव बोली कार्ल मार्क्स कहथिले बुझलो अंडरस्टूड यस मैम हला तो कैपिटलिस्ट सिस्टम जोड़ा अछि मोस्टली या ऊपर बेस्ड अछि एथरे कम वेज देबे लेबरर्स को अधिक समय काम करेबे अधिक समय काम करले कोन हो बेसी प्रोडक्शन हो बेसी प्रोडक्शन हेले कोन सरप्लस जनरेशन कोन हेले तांको प्रॉफिट बेसी हबो या ऊपर सेटा तमरो बेस्ड अछि गॉट इट नाउ कार्ल मार्क्स उडे कोट कहिथिले he said that history of society is based on conflict कि कहि परिबो कोन हिथिबो एटा what is this sentence is or this statement is trying to say history of society is based on conflict can anyone tell me एक्चुअली मैडम जेमति कि फ्रेंच रिवोल्यूशन ପରେ ହିଁ ଆମର कार्ल मार्क्स ର थ्योरी सब आस्थिला एटा तो से माने हां से काई कहली कि हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट तुम सोसाइटी जो तुमे हिस्ट्री को देखिबो सोसाइटी रो हिस्ट्री देखिबो इट इज बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट व्हाई सर मैडम एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट हेले गोटे क्लास स्ट्रगल टा होची माने क्लास स्ट्रगल होची दुईटा क्लासेस भितरे हां तो सेति मैडम डिफरेंस आसुची माने के डिप्राइव क्लास कि माने हैव होची ना हैव नॉट होची त तांको कॉन्ट्राडिक्ट होची तापर नुवा थ्योरी आसी एब्सोल्युटली तो सेटा को जोड़ा थिला
conflict of one idea with another idea. এটা কোন করা যায়? Dialectics. Dialectics was given by the concept of dialectics was given by Hegel, and Karl Marx was inspired by him. तो से तांकर dialectics रो एटा को नहीं गले आ गुटे से कहले materialism. Society, every aspect of society is based on materialistic or materialistic things. याकू फियर बाक कहिथिले, materialism विषय फियर बाक कहिथिले. तो कार्ल मार्क्स हेगल और डायलेक्टिक्स आउ materialism को मिसे कि तांकर डायलेक्टिक materialism बोली गुटे से तांकर गोटे कांसेप्ट स्टार्ट कले हला. दुईटार कांसेप्ट मिसे देला तांकर डायलेक्टिक materialism स्टार्ट कले. से डायलेक्टिक materialism को स्टडी कले से हिस्ट्री को, सोसाइटी रो हिस्ट्री को, और तापरे से कांसेप्ट देले हिस्टोरिकल materialism जोरा तुम काली पढ़िथिलो. So one idea when it comes into conflict with another idea. So यारो जदि हमें एग्जांपल लबा जंती तमे कहलो haves and haves not. Who are the haves? In a capitalist society, who are the haves? Industrialist. Industrialist, capitalist or the owning class. They have all the resources, they have control over the means of production, and they own the production. So they are the owning class and the haves. And haves not? Labor. Working class. Laborers or class. working class. हला एबे आमे जंती देखला एठी मु कहली एक्सप्लॉयटेशन जो कम वेज रे बेसी समय पई काम होची by your laborer class. Now when these classes are not conscious about it, okay, se manne jetale jinso bisoro conscious nahi, they have to do it for their survival. se manne kari chalchonti enti kari chalchonti hela ha enti to heba katha bhaliya, they are doing it. But after a point of time people will start to notice this pattern. They will start to get consciousness about how they are being exploited. अरे हमको तो इतने कम वेज दिया होची और इतने समय पे काम करा जाउची हमको. We are even given such a low amount, such a low wage, but we are made to work for such long duration. This is just injustice for us. This is unfair. So जेतेबेले ए थॉट टा पूरा कम्युनिटी हैव नॉट्स रो जो पूरा हैव नॉट क्लासेस रे एमर्ज हेबो, ओके, तो ताको आमे कहबा क्लास कॉन्शियसनेस. तांको गोटे क्लास कॉन्शियसनेस आसला that we are being exploited. So इटा आगो जेतेले कॉन्शियसनेस न थिला, that is known as class in itself or class for itself. That is known as class in itself or class for itself. Class in itself. Class in itself. Sure. Class for itself hobo. Sorry, class for itself. Okay. Give me a minute. Okay, give me a minute. Oh. So I was talking about whether when there was no consciousness that they are being exploited, तो सेटा को हम कौन कहबा? Class in itself.
Class in itself. When there are no there is no class conscious. consciousness. And when there is a class conscious, then that is known as a class for itself. Very good. Class for itself. Okay. So, eta kona habo? Ebe class for itself he gala ale kona habo? The people who are in the lower section of the society, the haves not or the working class, they will rise against the capitalist class. Yes or no? There will be a conflict, or what we can say, class struggle. The class struggle hochi mane, according to Marx, when these labor class will rise against the capitalist, there will come a very revolutionary change. There will come a revolution in the society, which is called as revolutionary change. The revolution aila pore kona habo? Capitalist system ta dhire dhire decline kori jibo, and there will be the proletariat will come and dominate the society. Okay. Means जोटा rich आउ poor भितर जोटा conflict चाउतला ताहाकु नेकी एटा कहचंती ना कारण Yes, absolutely, absolutely. तो तमरो जदि हमें देखिबा जोडा कार्ल मार्क्स हिसाब रे कैपिटलिस्ट सोसाइटी केमते डिवाइड हिचे, जदि एटा करूची मु ए ऊपर के रहबो कैपिटलिस्ट क्लास, जोटा को से कहचंती बोर्जुआ और बोर्जुआजी बोली से टर्म देचंती, राइट. तळे के रहबो Proletariat. proletariats. So these are your haves, these are your haves not. आउ ए मझिरे रहला तमरो सुपर स्ट्रक्चर. सुपर स्ट्रक्चर माने कोन? तमरो रूल्स, रेगुलेशंस, Government condition. हाँ, बिलीफ्स, जो थिरु कैपिटलिज्म इंपोज करा जाए अपॉन हुम? द प्रोलेटेरिएट. कैपिटलिज्म को सस्टेन करबा पई सुपर स्ट्रक्चर अछि. सुपर स्ट्रक्चर रे तमरो रिलीजन पळे आसीबो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तमरो पोप, बिशप्स, ए माने सब सुपर स्ट्रक्चर आसीबे. तापरे तमरो पुलिस, then bureaucrats. These are your superstructure. They work for the bourgeois or the capitalist, and they help the capitalist to maintain their dominance in the society. They support the capitalist and they together subordinate the proletariats. So ebe class consciousness asla kohla, these proletariats will rise up against the bourgeois. Okay, they will rise up against the bourgeois and rise up against hela pore revolution asibo. Revolution asila pore capitalist system will be overthrown and there will be the dominance of proletariat. ଏହା को हमें टिके लिंक करि परिबा फ्रेंच रिवॉल्यूशन सहित कि नहीं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कोन होइथिला? डार्क एजेस को जल्दी तमे जीवो, डार्क एजेस रे rule of the king have the divine rights to rule. Sitale the people were not able to question the authority of king and the religion, right? But as they progressed, as the society progressed and they started to think rationally, they rised up against the structure, the monarchy and this religious institution, and slowly our society evolved into a more scientific society or not. तो एटा गोटे कोन हो गला, ए चेंज टा को हम गोटे रेवोल्यूशनरी चेंज बोली कहि पारिबा कि नहीं? जेंति कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन रे हितला, जो बर्बन एम्पायर द लुइस 16 को ओवरथ्रो कर देथिले and there came a new form of political system. Monarchy was overthrown and new political system came into existence.
तो हेडा गोटे रिवोल्यूशनरी चेंज हला तो कार्ल मार्क्स हिसाब रे गुटे सोसाइटी एमती से कहिथिले गुटे ईच सोसाइटी सेडा को डिस्क्राइब करथिले ईच सोसाइटी ईच स्टेज ऑफ सोसाइटी in each stage the society sows the seed of its own destruction. In each stage, society sows seeds of its own destruction. माने गोटे एंती सिस्टम टा आसीबो जोथिरे दुईटा कैटेगरी रो लोक हेबे दुईटा क्लासेस रो लोक हेबे गोटे the one who will be controlling everyone and the subordinate class. When the subordinate class will realize and have the consciousness that they are being exploited, they will rise up against the class which is dominating. When they will rise up, a revolutionary change will come into the society. सेटा को से एमती स्टेटमेंट रे से डिफाइन करथिले बुझलो class division of society in the capitalist form and how your proletariat rise up against the capitalist. So this is basically all about your class struggle. एटा को ही class struggle या फिर हमें class conflict कहि परबा ओके एटा ही class struggle और class conflict ठीक अछि तो according to class Karl Marx दुईटा classes हेबे society रे one class will rise up against another class when they will gain consciousness that they are being exploited and a new form of society will emerge. Eta egala class struggle, class conflict ta. Conflict between your capitalist or bourgeoisie and your proletariats. Okay, this is class conflict. Bujhi ala? Any doubt, any confusion? No, madam. Okay. तो एडा देखो एडा पे सुनो तुम बुझो इन केस एनी डाउट यू कैन टेल मी ऑब्वियसली बट मु तुमको नोट्स प्रोवाइड करिवि सेटा को पढिबो थरे पढिबो तापरे बुझा पडिबो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओके देन ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर इफ इन केस यू हैव एनी तो यदि हमें देखिबा क्लास जो वर्ड स्ट्रैटिफिकेशन तमे पढिबो जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन क्लास स्ट्रैटिफिकेशन हला तो तमरो capitalist society रे class basis रे stratification means division of people into various hierarchy or categories. Okay, so class word is derived from a Latin word which means classes. Classes रो meaning होची division of people. In your capitalist society, you will see division of people based on caste, class, जाको हमें कहबा class stratification. है ना? तो Das Capital सुनिथिबो. Karl Marx रो दुईटा important book होची. One is Communist Manifesto, another is Das Capital. In Das Capital, Karl Marx mentioned about three important classes. Okay, one is your salaried labor / workers from working class. Another one is your capitalist and third one is your landowners. Landowners जोड़ा तमरो feudalism रे थिले हला feudalism रे जे landowners थिले से परे after a point of time they also became capitalist. Okay, so this battle between your haves and have not, there will be a battle between the haves and have nots. This is known as the class struggle or we can say class
conflict. Got it? If I can sum up it this way. So it picture अच्छी रखो. इटी मो कैपिटलिस्ट सिस्टम को इटी बहुत गुड वे रे तुम पिरामिड टा दे देची. How these people come in the lower rung of society. This is the superstructure. This two. We fool you and we shoot you. This is the superstructure. And in the top is your capitalist. We rule you. Okay, they are saying we rule you. And your superstructure is saying we fool you and we shoot you. जो कि तुम्हारा पुलिस आसिले, सिक्योरिटी पर्सनल आसिले, आर्मीज आसिले, मिलिटरी आसिला तुम्हारा एक कैटेगरी रे, सुपरस्ट्रक्चर कैटेगरी रे. And last one is the proletariat. We feed you, although you feed us, but the capitalism in the capitalist society, these capitalists have all the power and they accumulate all the profit. They are suppressed or burdened by this whole system. इतले देखियो, they are being burdened in this picture. It is given. तो एटा को हमें sum up कर दे पारिबा capitalist system केमती अछि. Superstructure और capitalist रो burden धरचंती किए proletariats. बुझिला? तो it is pictorial representation लिखला. आउ society केमती गुटे मो statement टा कहथिले ना, in each stage society sow the seed of its destruction and there is class conflict. Society is based on conflict between different classes. So primitive communism रे देखिबो no conflict because there was no classes, because communism is also known as classless society, which is basically a, we can say, a utopian concept. That is an imaginary concept. Absolute communism केबे achieve कला एंती situation most probably केबे आसीबनी. There will be no absolute communism. There will be some form of communism, but no absolute communism. फिर slavery society रे oppression class थे थिले, oppressed class थिले, slave owners and slaves. Then feudalism रे landowners or serf, capitalism रे bourgeoisie and proletariat. तापर socialism रे state managers and workers. अब communism रे तो classless society. There will be no such conflict बोली एंती तुम्हारा कार्ल मार्क्स टा describe करिथिले. बुझिलो? So this is all about the theory of capitalism and class conflict. Okay, there will be an oppressing class and there will be an oppressed class. When this oppressed class will gain consciousness that they are being oppressed, they are being exploited, they will rise up against the oppressing class and there will be a change, a revolutionary change in the society. Got it? So this is all about your class struggle, class conflict. या भीतर आप कुछ डाउट हला एटी मो पिक्चर्स भी दे देची. दिस इज लाइक अ यू नो गुटे ग्लांस रे जंते तुमको सब कांसेप्ट तमे इजीली रिवाइज करि परिबो. गूगल रे एंती बहुत से पिक्चर्स अछि, तमे तमरो जतले निजे पढुचो you can utilize it. There are various other pictorial representation of the theories that you are going to study, so you can use that for your own benefit. So I have selected some. It is superstructure केंती materialistic theory रे superstructure आवटा विषय दिया हिची. So according to Karl Marx, the foundation of the society is based on your forces of production and relation of production. ता ऊपर की रहबे superstructure रहबे. A superstructure will support the capitalist. They will support the capitalist and will maintain capitalism in the society. Okay. और एटी डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म रो भी गुटे मु बहुत भल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ते पाइली, तो से पिक्चर टा मु एटी ऐड कर देची. ओके, तो क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कैपिटलिस्ट थ्योरी बुझा पड़ला? यस मैडम. ला एटा नोट्स मु देबे, तमे थरे रीडिंग करिवो. सिट्रो आउ किछि डाउट्स आसला देन यू कैन टेल मी. ओके, तापर आपको जतले तमर सोशल मोबिलिटी आसीबो सेथिले तमे गुटे
you know proletarianization proletarianization sir କହିଥିଲେ କି proletarianization sir କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ notes ରେ ଥିଲା sir notes ରେ ଥିଲା ଯୋଡା sir କାଲି ଏଟା ଦେଇଥିଲେ how people in the middle rung due to certain economic problem they get they get pushed into the proletariat category ठीक अछि तो जदि मु एबे तुमको बुझेबी गोटे कांसेप्ट अछि कार्ल मार्क्स जोटा कहिथिले गोटे प्रोलेटेरियनाइजेशन ही गला आ गोटे पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस बोली से गोटे कहिथिले ठीक अछि पोलराइजेशन ऑफ क्लासेस तो एठी तमर बोर्जुआजी रहले एठी प्रोलेटेरिएट रहले आ मझिरे गोटे क्लास ते रहिबे जोटा कि हमें मिडिल क्लास कहूछु बट कार्ल मार्क्स नेवर रियली यूज द टर्म मिडिल क्लासेस he rather said it as petty bourgeois okay तांगो पाई मिडिल क्लासेस लगी से टर्म यूज करथिले पेटी बोर्जुआ से मोस्टली कहिथिले दुईटा ही क्लासेस रहइबो गुडा होची बोर्जुआ आ प्रोलेटेरिएट आ गुटे पेटी बोर्जुआ मींस they are not really the very से माने सबु जिनसो ओन करू नाहंती बट से माने एंती भी नहीं कि से माने प्रोलेटेरिएट क्लासेस को जिवे they have a very limited ownership जेंति कि तमरो के शॉपकीपर्स ही गले तबरे स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स ही गले जेंति कि तम एबे कार सपोज गोटे काजू फैक्ट्री अछि हला काजूर फैक्ट्री अछि से तम पेटी बोर्जुआ क्लास रे जिवो से तारो गोटे मशीनरी तो थिबो सेथिरे से बहुत लिमिटेड लोगो को अपॉइंट करि परिबो ओके बट इन केस काजूर प्रोडक्शन रे किछुडो असुविधा हला तारो भल से हार्वेस्टिंग हे पारलानी तो कोन हबो तारो जो प्रोडक्शन टा कमी जिवो प्रोडक्शन कमिले कोन हबो तारो जो ओवरऑल जो गेन टा that will decline and if it goes in that way and suddenly there will be economic recession hypothetically I am saying okay crop failure hi gala au market रे गुटे economic recession te पळे आसिला आ ता जोगु से कोन गला bankrupt hi गला then this class will come into what proletariat class तो से तारो डिक्लाइन ही गला कि नहीं तो एटा को कहा जाए पॉपराइजेशन बोली एटा सोशल मोबिलिटी रे तमे पढिबो ए जिनसटा को कहा जाए पॉपराइजेशन व्हेन people from the have section for some unfortunate condition unforeseen situation economic recession hi gala ki bankruptcy hi gala for that reason their classes is declining तांगो क्लास टे डिक्लाइन ही वाला क्लास स्टेटस टा डिक्लाइन ही वाला और से माने ए कैटेगरी को पळा आइसले सेटा को जाय पॉपराइजेशन और जदी ई प्रोलेटेरिएट कैटेगरी रो के टिके भल इनकम कला दे आर एबल टू अफोर्ड गुड क्वालिटी एजुकेशन and they can send their children from your proletariat category कि गोटे लेबर क्लास रहला से तारो जो किड्स तांगो छुआ को भल एजुकेशन दे पाला से माने भल एजुकेशन पाइले तो भल जॉब रे रहबे भल जॉब पाइले तो इनकम भल हला इनकम भल है कि से माने तांगो निजो गोटे स्मॉल स्केल ऑफ फैक्ट्री स्टार्ट करले से फैक्ट्री धीरे धीरे ग्रो हला परे से माने they will increase their class into bourgeois and this is known as bourgeoisization which is a very rare case okay जेतले bourgeois रो downfall hi जाउची and they come into proletariat category they will be that process is known as pauperization
and when proletariat will increase and go into the category of bourgeois, that is known as bourgeoisation. हला बुझा पड़ला इटा को कहा जाए polarization of classes. तो खाली दुईटा क्लास एंती माने concrete way रहउनांती. Sometimes what is happening, there is a mobility between these classes. One class is increasing in the ladder or maybe declining. तो सेटा को कहा जाए polarization of classes. So if I have to define polarization of classes, it is conversion from one class to another. One class to another class. Bourgeois ru jodi proletariat ko ascho, then it is known as pauperization. Proletariat ru jodi bourgeois ko jaucho, then it is known as bourgeoisation. Got it? This is known as polarization of classes. या भितर विषय टिके आउ टिके डिटेल रे तमे सोशल मोबिलिटी रे पढिबो. क्लियर एवरीवन? तो गोटे पेटी बोर्जुआ बोली जानला आ गोटे लंपेन प्रोलेटेरिएट बोली सुनिचो. पेटी बोर्जुआ मींस द मिडिल क्लासेस को हमें पेटी बोर्जुआ कहि परिबा. बट व्हाट इज लंपेन प्रोलेटेरिएट? extremely deprived class को मैडम कहि परिबा जेंति डेली लेबर. Yes, absolutely. Extremely deprived or impoverished. The proletariat category रो सबुठु lowest, economically completely backward जो सबुठु lowest आसीबे तमरो lumpen proletariat. बुझिलो? So one thing you noted that Karl Marx never recognized middle classes. से केबे middle class को recognize करनथिले. Never. Okay. He just said that in this bourgeois there will be some small owning classes. ठीक अछि जाको से टर्म कर देथिले पेटी बोर्जुआ. और सेडा को से काइंड ऑफ मिडिल क्लास को सेट्रे से एक्नॉलेज करले. बट कार्ल मार्क्स नेवर एक्नॉलेज्ड मिडिल क्लास. से मिडिल क्लास वाली किछि टर्म यूज करनथिले. Okay. He said there is only two classes, haves and have-nots, bourgeois and proletariat. But in this bourgeois, there is a small owning class which he termed as petty bourgeois. जदि एही पिरामिड को मु आउ थरे जदि भल से एठी पिक्टोरियली बनेबी तो एठी आसीबे तमरो बोर्जुआ, एठी आसीबे तमरो प्रोलेटेरिएट्स, एठी आसीबे तमरो सुपर स्ट्रक्चर. Okay. Now here in this category will come your petty bourgeois, and in this category here in the last one will come your lumpen proletariat. Okay. And then if I include the polarization of classes, proletariat, when they rise up in the class category, then or they become bourgeois, then it is known as bourgeoisation. While when your bourgeois will decline in the class hierarchy, this is known as pauperization. बुझलो? तो एटा हमें class in the capitalist society, different classes in the capitalist society, and
polarization of class को मु ए diagram रे sum up कर देली. You can use this diagram in your exam as well, in your answers. Okay, got it? Clear everyone? Any doubt? काउ किसी डाउट हैला तो पछे काउ किसी डाउट अछि then you can ask. मैडम No डाउट तो doubts? नहीं किंतु मैडम जेते बेले ई हां मैडम डाउट तो निनो मैडम जदि जेते से मॉडल आंसर जो देबे मैडम टिके माने सा देखोथिले खाली 150 वर्ड थिला तो मैडम कहीं 10 मार्क 15 मार्क 20 मार्क आसी तो मैडम जदि 250 वर्ड भितरे टिके कोले माने भलो होत. हाँ माने तुमको नोट्स देला बेलको मु बहुत डिटेल नोट्स देबी एबे कोन कि एटा मु तुमको ओवरऑल जहां भी तुम नोट्स लिखाई छी तारो एटा तुमको कांसेप्ट क्लियर कर दूची. नोट्स देला बेले आई विल गिव ऑल द इंपोर्टेंट पॉइंट्स so that it will be helpful for your answer writing as well. सेथरे मु एडिशनल पॉइंट्स भी इंक्लूड कर देबी. मु तुमको नोट्स देला बेले तुम देखि देबो थोर देखि देबो हला. once I upload the note you can check. I'll give complete detailed notes so that it will be helpful for your answer writing as well. Okay, एथिरो तो तमे 100 150 वर्ड्स लिखवाडा पॉसिबल नहीं. एडा तमे गुडे समरी रे वन पैराग्राफ लिखि पारिबो किंतु बहुत ही सिस्टमैटिक वे रे लिखवा लगी जेंति तुमको हेल्पफुल हबो सेंति मु नोट्स भी दे देबी हला. डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. हां मैडम. So okay, so we studied about theory of capitalism, how capitalistic society emerged, and about class in itself, class for itself, and how it led to class struggle and class conflict. Additionally, we studied about polarization of classes. Okay, and tomorrow we are going to study alienation plus criticism. Criticism of thinkers is very important because whatever they are saying, we are not necessarily or we are not mandatorily are going to agree with every point, right? So we need to criticize where they are lagging, where the theory of the thinkers are lagging. So we will do the criticism of Karl Marx. Okay, सेट्रे एलिएनेशन रे गोटे कांसेप्ट पढी आमे मु कहि दोची आजि कहि दोची राइफिकेशन के सुनि छ एटा very interesting concept we will study in alienation tomorrow. Reification ku we can say it is like giving godly status. Okay, godly status to an abstract entity. Okay, reification we can define it as the act of treating something abstract, okay, as if it were concrete or real entity, which is, that means giving them some godly status. ये जिनसटा को कार्ल मार्क्स कहिथिले, he termed it as commodity fetishism. Do you know about commodity fetishism? He said this as commodity fetish bali kahitile, because this godly status are mostly based on generally given to your commodity only. Abstract entity ko hai chhi something abstract, so it is mostly given to a commodity. So commodity fetish kebe sunicha? Fetish mane hochi हां जेमति कि desire. मैडम कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन
commodification of women ना मु objects विषय रे कहूची women टा टिके आउ टिके advanced concept वाला मु objects विषय रे कहूची abstract objects ना मु abstract कहली तो commodity fetish माने होची desire सेटा जानथिबो तो commodity fetish माने कोन हला it is object of desire simple example आजी रो सोसाइटी रे आईफोन कौन सी भी एप्पल प्रोडक्ट we give that a very like a we treat it like something very magical or very revolutionary, right? We give that a very godly status and also to the person one who is owning it. Ebe jonko pakhe iPhone dekhi dele then people go crazy, oh my god, he or she has an iPhone, that means they will be definitely very rich, they got some very good wealth in their pocket. सेंती iPhone को आमे देखु छु नहीं मोस्टली लग्जरी गुड्स आजिकली रो जमाना रे the era that we are living in today's generation luxury goods are treated in that way. तमरो Louis Vuitton, Dior, Gucci ये सब ब्रांड रो जिन सब पछे लोग बाया ही जाती यस तो मैडम जारा ब्रांड कहले हां 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 जारा तो छाड़ो जारा तो सेटा टिके तळकु पळे आसीबो बट if you own a Louis Vuitton then your status is extremely high is what people will consider, right? And people are therefore going crazy about it, yes or no? ebe bahut dekhuthbo you would have come it would have come into your notice how people from the very economically backward section टिके जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ जे नहांती से माने आजिकली आईफोन ईएमआई रे किनी लागिचंती, they are trying to purchase iPhone in EMI. Recently there was a video that was viral where a boy, his mother was a vendor वो से सागो बिकुथिले बदे से ता माँ को force कला that if you don't buy me an iPhone I will not eat, and he didn't eat for like 3 days. His mother had to forcibly have to collect money and somehow he bought iPhone, and that to iPhone 16. He need iPhone 16, the latest model. That amount of craze, since you godly status, it koi paribak nahi, eta kaha jaye commodity fetishism. This godly status that we are giving, this craze that we have behind this luxury goods and commodity in general, right? तो एटा हमें काली एलिएनेशन रे पढिबा केंती कैपिटलिस्ट सोसाइटी consumerism को पुश करे, consumption को पुश करिवो. You will see in today's era a hoarding culture जो थ्री लोग बेसी बेसी सामान किने आनिबे, सेल आउ एंती कोन कोन थिबो, बाय वन गेट वन फ्री, तो चला दरकार थाउ कि दरकार न थाउ 50% ऑफ हैला माने किनिबा. If you buy above 5999 then you will get 1000 rupees off. So even though if you don't need the item you will buy it. That kind of consumption is been charged in the society. So increase in consumption to kon hobo, production increase kariba ko padibo, production increase hele sale besi hobo, sale besi hele consumption increase hele sale भी increase hobo, sale increase hele obviously capitalist को profit होची कि last रे जेंती एबे again coming back to your iPhone, आगो आईफोन रे चार्जर भी दोथिला तम इयरफोन्स भी दोथिला फोन भी दोथिला. आजिकली नो अडैप्टर, you have to buy it separately. If you want earphone you have to buy it separately. It is inducing consumption in the society or not? आ तमे किनिबो बेले काहार प्रॉफिट होची, से पैसाटा जाउची कैपिटलिस्ट जो ओनर रो एप्पल पाखरे जाउची सबु, तो तार जो वेल्थ ता प्रॉफिट इंक्रीज होची कि नहीं. So you will see how consumption is inducing in the society due to
this whole commodity fetishism culture, commodity culture, where people are buying things like crazy. They are treating goods simple commodity साधा phone te ame taku केंती godly status दोचु just because I am or someone is owning an iPhone. They are treated like some wealthy or very rich person, or तांको social status बहुत अधिका देखा जाए, right? सेथि पाई से जिंसो को माने to look rich we try to buy this luxury item. It doesn't matter if we can afford it or not, if we have that affordability or not, but we still buy it. Why? We need to look rich, right? सेटा हमर नीड थाउ कि न थाउ, आईफोन न हेले भी चलिबो तो जबरदस्ती लोक किनिबे. Why? We need to look rich. We need to have that social status that we are rich, we have that money, we need to look appealing in front of people. So just because of a simple object, a simple phone, ame taku etki hype kari dochu that it is now deciding your status in the society, how much power we are giving to a commodity. बुझलो? So ये सब concept हमें detail discussion करिवा काली with the concept of alienation, and we will also do the criticism of the theory of Karl Marx. Okay? So এটা বুঝা পড়লা? Yes, ma'am. I hope आजी क्लास में जितकी हमें discussion करिछु सब clear हो जाइछि. यदि in case if you still have any doubt, तमे आजी गुटे reading करिवो और तापरे काली you can ask me. Okay? तो जा आज concept पढ़ाई I have given here. Theory of capitalism, then class struggle, class conflict, class in itself, class for itself केंती हला, ता through revolutionary change केंती होची, polarization of classes, आउ alienation of criticism of Karl Marx हमें काली करिवा. Okay? Thank you, madam. Okay. Thank you. So if you don't have any doubts, we can wrap up the class. You can wind up the class today. Ma'am. Ma'am, se ma'am ଗୋଟେ class in itself ଟିକେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ. Class in Itself. Yes. ଆଉ ଜଣେ କି କଣ କହୁଥିଲେ? Actually ma'am ସବୁ ବୁଝି ହୋଉଛି but problem ହୋଉଛି ଯେ ମାନେ how to present systematic way ରେ କେମିତି present କରିବୁ ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ମୁଁ confuse ହୋଉଛି ଟିକେ. I understand you. Okay. Initially you will have this dilemma and this confusion, but as you will progress you can understand. तुमको धीरे धीरे आसीबो जिंसो एबे एतकी overwhelm होनी धीरे धीरे हबो. Okay? आगो तमे first of all try to understand the concept. Okay? Try to understand the theories. जेबे देखिबो से theory को तमे example सहित link करि पारुछो, then you know that you have absolute hold of the theory. Okay? जेंति कि मु dialectics रो एबे example टे देली. Idea, anti-idea and a new idea. सेटा को हेगेल कहिथिले thesis, antithesis and synthesis. From that concept Karl Marx was inspired, and he said there will be conflict of two ideas and then new idea will come. So conflict of idea रो तांकर जदि example जा होची, then there will be a bourgeois, there will be proletariat. These two classes will be come into conflict with each other, and a new society will form. A new change will come into the society. जेंति alienation रो तम alienation तो काली पड़िबा, but commodity fetishism रो जेंति मो example टे देली, Apple को link कली या फिर luxury good को link कली, जेंति तमे instantly जहाँ भी concept पढुचो सेटा को तमे तमरो day to day life हला या फिर किछि भी example सहित तमे जेतेले quote करि पारबो, you know that you have the hold of the concept, and it will come over the period of time. So you don't need to be overwhelmed now. It will come slowly. Okay. Actually sir କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ daily basis ରେ ଯାହା ପଢା ହବ day to day ଆମର notes update ମାନେ କରିବ, but ଏବେ ମାନେ ଲାଗୁଛି information ମାନେ overloaded ମାନେ ହେଇ ଯାଉଛି ନା, then confusion ହଉଛି present କେମିତି କରିବୁ, ଲେଖିବୁ କେମିତି.
First you have to understand the concept and slowly you will be able to filter out कि लिखला बळे एटा लिखिबार अछि कि नै because तमे 100-150 words रे एतकी सब concept तो लिखि परिबनी ना. You have to write only few important topics or the theories that are asked in the question. You have to meet the requirements or the demands of the question, and you have to eliminate all the concepts that are not required, and that will come over the period of time. You will slowly learn how to filter it out. Okay. Okay. So class in itself, how class for itself, how thore kahi debi, right? So class in itself is that time or that moment where there is no consciousness of the classes and their positions. No consciousness of classes and position. Mane capitalist, they are working in their way, and the proletariat, they are working in their way. से मन को जो proletariat है गले तांको जाना नहीं कि they are being exploited by the capitalists. They don't know about this. They are not able to realize this. Okay, within a very small amount of wage. Okay, they are working for extended hours. Okay, they are giving their labor power. But what is happening? The capitalist is taking away all the profit. So there is no consciousness about it. Class for itself is when there is consciousness. Consciousness of the entire working class. Class, पूरा class खाली जणे दुई जण की गुटे ग्रुप कले नहीं, पूरा entire working class, जतकी जण working class रो छंती, जतकी जण proletariat अछंती, entire working class, when they get conscious or they get this realization that we are being exploited by the capitalist, we are being exploited, जब से realize कले, not only one or two or a group of people from your proletariat class, but the entire working class, पूरा class, हला खाली जणे दु जण कले नहीं, पूरा class जेतले realize करे कि no, we are being exploited, we are being forced to work in a very limited wage for extended hours, we are being exploited, we are being treated unfairly. So when this consciousness will come, they will rise up against the capitalist. Now यही consciousness को कहा जाए class for itself, where an entire class is acknowledging or getting the realization or being conscious about their position in the society. Position eta ki we are being exploited. Class in itself, there is no consciousness about their position. Okay, there is no such realization. Class for itself, there is consciousness, there is realization of their position. All right, Mujila? Yes, ma'am. Okay, a class in itself, class for itself, or detailed notes I will send you in their Telegram group, and whatever we have discussed, this handwritten one, also I will be sharing in the Telegram group. Okay. So thank you everyone. मैडम मोर डाउट थिला. Okay. हाँ कहो. हेलो मैम. हाँ कहो तन्मय. मैडम जेमति कि ए जो क्लास फॉर इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ रे जदि मैं एग्जांपल जदि क्लास फॉर इटसेल्फ जेमति कि हमर लेबर ऑर्गेनाइजेशन माने होचंती ताको मैं एग्जांपल दी परिबा मेंस रे. लेबर ना तो मु सेटा कहले ना पूरा क्लास गुटे ग्रुप या एंती कहले नहीं, पूरा क्लास सेटा देखो आज एबे तो टाइम हेलानी, मु काली फर्स्ट क्लास रे तुमको हाउ टू डिटरमाइन क्लास वाली गुटे कांसेप्ट कहि देला. तुम क्लास केंती डिटरमाइन करूचो सेठी तमरो आसीबो गुटे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आ गुटे सब्जेक्टिव क्राइटेरिया. ओके, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया टा जोड़ा होची तमरो हेडा होची क्लास फॉर इटसेल्फ,
ऑब्जेक्टिव रे आसीबो तमर क्लास इन इटसेल्फ तो सेडा को डिफाइन करले तुमको बुझा पड़िबो that if you can take the example or not. Okay, when I'm telling an entire class means entire class पूरा ए जो कैटेगरी रे जेतकी आसीबे सबे सबे से जिंस रियलाइज करिवे एबे गुटे ऑर्गेनाइजेशन नेले कोन खाली से माने से जिंस रियलाइज करचंदी बाकी सब कोन हला they are not knowing about it, they are not realizing it, they are not conscious about it, or they are not aware about it. So entire class need तो पूरा class जदि जतले they'll come together, they can only then will be able to rise up against the capitalist, and then only we can say it is class for itself. Okay, तो काली मु फर्स्ट कांसेप्ट एटा तुमको डिस्कशन करिबी तापरे तमे एटा क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ रो तम कंफ्यूजन ता जदी किछि अछि देन इट विल बी क्लियर. ओके, एनी मोर डाउट्स? No more? Okay, so thank you guys, see you again tomorrow same time, and I'll upload all the notes, you can go through it, and in case if you have any doubt you can ask me tomorrow. Okay, we'll start with alienation criticism, and I will add this one also. Kali first jinso mu tumku how to determine class value tumku seta se concept ta koibi hela tapre tomar eta confusion ta clear hijibo. Okay, Okay. okay, thank you everyone.